Lipogenesis and lipolysis. So in well-fed condition, there is a triacylglycerol synthesized, which is called as a lipogenesis, in which three fatty acid and glycerol are added and form the triacylglycerol, which is activated by the insulin, and this process occurs in the liver and adipose tissue. But in the fasting or starvation state, there is triacylglycerol breakdown into three fatty acid and glycerol, which is called as a lipolysis, which is activated by the glucagon and epinephrine. This process occurs in the adipose tissue. Now we discuss lipogenesis. So lipogenesis is the metabolic process through which fatty acid and triglyceride are synthesized, and this process occur in liver and adipose tissue. सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड, जब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट या फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को फैटी एसाइल को ए के साथ एस्टिफाई किया जाता है तो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म होता है। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट फॉर्म होता है बाय द फॉस्फोराइलेशन ऑफ द ग्लिसरॉल catalyzed by the glycerol kinase and by the reduction of dihydroxy acetone phosphate. Glycerol kinase एडिपोज में डिफिशियंट होता है, तो जो मेजर सोर्स है ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस के लिए वो होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट होता है। Now we discuss activation of the fatty acid and glycerol for triglyceride synthesis. So fatty acid convert होता है fatty acyl CoA में in the presence of the acyl CoA synthetase, and इस रिएक्शन में ATP कन्वर्ट होता है AMP में, एंड ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में बाय द एक्टिविटी ऑफ द ग्लिसरॉल काइनेज, जो कि एडिपोज टिश्यू में डिफिशियंट होता है। तो ये रिएक्शन लीवर में होती है और इस रिएक्शन में भी ATP रिक्वायर्ड होता है। नाउ वी डिस्कस ओवरव्यू ऑफ द ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस। सो ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में, एंड ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में जब एक फैटी एसाइल मॉलिक्यूल ऐड होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड में। देन सेकेंड फैटी एसाइल मॉलिक्यूल ऐड होता है और ये कन्वर्ट होता है फॉस्फेटिडिक एसिड में। देन फॉस्फेटिडिक एसिड कन्वर्ट इनटू द डाइएसाइल ग्लिसरॉल, एंड बाय द एडिंग ऑफ द थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसाइल CoA, डाइएसाइल ग्लिसरॉल कन्वर्टेड इनटू द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में ट्राई मीन 3, तो 3 मतलब यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसाइल CoA की रिक्वायर होगी, जिससे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल बनेगा। इसका निमोनिक है गाना गाना लिरिक्स पर देर तक, G फॉर ग्लिसरॉल, सेकेंड G फॉर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, LY फॉर लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड, PA फॉर फॉस्फेटिडिक एसिड, D फॉर डाइएसाइल ग्लिसरॉल एंड T फॉर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। आई होप आपको ये याद हो जाएगा निमोनिक से। Now we discuss triglyceride synthesis in the detail. So glycerol convert हो जाता है glycerol 3 phosphate में by the activity of the glycerol kinase. Glycerol kinase adipose tissues में deficient होता है, इसीलिए ये glycerol 3 phosphate फॉर्म होता है एडिपोज टिश्यू में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस का एक इंटरमीडिएट है जो कि ग्लूकोज से फॉर्म होता है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ द ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, एंड दिस रिएक्शन रिक्वायर NAD+. Now glycerol 3 phosphate are converted into the lysophosphatic acid by the adding of the 1 fatty acyl CoA. Lysophosphatic acid are also formed by the 1 acyl DHP, which is formed by the dihydroxyacetone phosphate, and this reaction require 1 acyl DHP reductase and also require NADP+. Now lysophosphatic acid converted into the phosphatidic acid by the activity of the acyl transferase and the adding of the second molecule of fatty acyl CoA. Now phosphatidic acid are converted into the diacyl glycerol with the help of the phosphatase, and diacyl glycerol by the adding of the third molecule of fatty acyl, and by the activity of the acyl transferase, diacyl converted into the triacyl glycerol. Now the triacyl glycerol are formed
Now we discuss lipolysis. So the triglycerol stored in the adipose tissue undergoes hydrolysis by the hormone sensitive lipase to form free fatty acid and glycerol. तो जो भी triacylglycerol adipose tissue में stored होता है उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज से और फॉर्म होता है फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये जो लिपोलिसिस रिएक्शन है ये एडिपोज टिश्यू में होती है। नाउ वी डिस्कस steps of the lipolysis. So first, by the activity of the adipose triglyceride lipase, triglycerol are converted into the diacylglycerol and one fatty acid are removed. Now diacylglycerol by the activity of the hormone sensitive lipase are hydrolyzed and second molecule of fatty acid are removed and diacylglycerol are converted into the monoacylglycerol. Now monoacylglycerol are converted into the glycerol by the activity of the monoglyceride lipase and third fatty acid are removed. So this is a lipolysis. There is a triglycerol are converted into the glycerol and three fatty acid are removed. Fate of glycerol and fatty acid. So triglycerol are converted into the glycerol and three fatty acid by the lipolysis. Now this glycerol goes into the liver and converted into the glycerol 3-phosphate by the activity of the glycerol kinase. These glycerol kinase are deficient in the adipose tissue. So this glycerol 3-phosphate are only present in the liver. Now this glycerol 3-phosphate are converted into the dihydroxyacetone phosphate. We already discussed dihydroxyacetone phosphate are converted into the glycerol 3-phosphate by the activity of the glycerol 3-phosphate dehydrogenase, and this reaction is the reversible. So glycerol 3-phosphate are also converted into the DHAP. So DHAP have a 2-fate which convert into the pyruvate by the glycolysis, and second it is formed the glucose by the gluconeogenesis. Now 3 free fatties goes into the fatty acid oxidation and form the more acetyl-CoA. These acetyl-CoA are entered into the TCA cycle and produce the ATP into the electron transport chain. So it is the fate of the glycerol and fatty acid after the lipolysis. Regulation of lipogenesis and lipolysis. Lipogenesis and lipolysis are mainly regulated by the insulin, glucagon, growth hormone, and epinephrine. Insulin mainly activates the pyruvate dehydrogenase, which is main enzyme of the TCA cycle and form the acetyl-CoA. Next, it also activates the acetyl-CoA carboxylase, which are regulatory enzyme of the fatty acid synthesis. By the more fatty acid synthesis, it synthesizes the triglyceride. And third, insulin inhibits the hormone sensitive lipase, which main enzyme of the lipolysis. So by the inhibition of the hormone sensitive lipase, no lipolysis occur and favors the lipogenesis. Now glucagon, growth hormone, and epinephrine activate the hormone sensitive lipase, which favors the lipolysis. Second, it inhibits the glycolysis. So if the glycolysis if the glycolysis are inhibited, so no TCA cycle occur and no acetyl-CoA are formed. And third, glucagon favors the oxidation of fatty acid. And last, it is inhibit the acetyl-CoA carboxylase. So by the inhibition of the acetyl-CoA carboxylase, no fatty acid are synthesized and no triacylglycerol are formed. So thank you for watching. If you like my videos, please like, comment and subscribe my channel.